Good morning, students. In today's session, we are going to start with Accounting Standard 16 illustration part and Accounting Standard 10 remaining part of illustrations. Okay. Before starting any session, first we will quickly revise names of accounting standards. Yes, any one of you raise your hand. Yes. Ajay Surya. Ajay Surya ji. Good Okay, morning, start sir. bit. Good morning. Sir, AS1 disclosure of accounting policy, AS2 valuation of inventories, AS3 cash flow statement, AS4 contingency and events occurring after the balance sheet stated, AS5 net profit or loss for the period, and changes in accounting policies, AS7 construction contracts, AS9 revenue recognition, AS10 property, plant and equipment, AS11 foreign exchange rate changes. The effect of changes in foreign exchange rate. AS12 accounting for tax government grant. AS13 accounting for investment. AS14 accounting for amalgamation. AS15 employee benefit. AS16 borrowing cost. AS17 segment reporting. AS18 related party disclosure. AS19 leases. AS20 earning per share. AS21 consolidated financial statement. AS22 accounting for taxes on income. AS23 accounting for investment in associate and joint venture. AS24 discontinuing operation. AS25 interim financial statement. AS26 intangible asset. AS27 financial report of interest in joint venture. AS28 impeachment of assets. AS29 provision contingency and contingent assets. Provision, current, contingent liabilities and contingent assets. Okay, sir. Very good, Ajay Surya ji. Have you revised Accounting Standard 16? Say yes or no. Yes, sir. Have you revised? Have you written 100 pages book? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So Accounting Standard Yes, 16, sir. what it talks about, can you tell me? Borrowing cost, it is related to? It talks about if we borrowed money for prepare a asset, that borrowing interest or can be capitalized. Okay, when you can capitalize the interest, correct. When you can capitalize the interest is capitalized on which assets? On any asset that you purchase or any Only means? qualifying Only asset. qualifying asset. Very good. The word is qualifying asset. What do you mean by qualifying asset? I mean, tangible or intangible assets. It No, my give dear. No. Huh. future economic benefit. No. Probable. No. An asset which takes more than More than 12 12 months, which is substantial called as period. substantial period of time. Yes, Substantial Ajay period. Suraj. It's okay. Now you are recalling it. Okay. When to start this capitalization? When you have taken loan or when expenditure incurred or both? When expenditure incurred. No. You have to take a loan, you have to incur expenditure, and you have to start with these activities. And if these activities are not started, then you cannot capitalize it. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So capitalization starts only if there is borrowing, there is expenditure Borrowing and incurred, and activities which are incurred is you have to start with that activities. Correct. yes, sir. Okay. So then only you can do borrowing. Correct. Yes, sir. Then you can capitalize it. And when to cease capitalization? Sir. When to cease, when to stop capitalization?
Cease. Okay. When the substantial process are completed or the partly construction is completed, part of the part is When asset usable. is, in simple language, when asset is ready to use. Yes, sir. When asset is ready to use, you will stop that capitalization. Yes, sir. Partly or wholly. Huh. Okay. So you have to use that ACE language, Ajay. You're doing it properly, but the way you are not answering, okay, you are answering in very general language. You have to recall all these concepts, okay. Okay, sir. So, what is the best solution for this? Practice. No, what do you have to practice? uh, Reading and writing the accounting language. Only and only reading 100 pages book. Okay, sir. Okay, if you revise it properly, 100 pages book, it is a solution for all your, problems. So 100 pages book is very important. That will get your, idea about the accounting standard, and not only accounting standard, but you will understand how to write the answer also. Provision part you have to understand from the 100 pages book. Okay, and then you solve all illustrations which are given by me, and additional questions also, and other illustrations of study mat and past examination questions are sufficient. Okay. Have you bought Okay. scanner? Scanner, sir. Scanner for all subjects you bought it. Okay. Okay, sir. You purchase all type of scanner, all scanners of all papers. Okay. It is the past examination paper set, Okay, sir. Okay, sir. chapter wise. Okay. So it might be, means I will prefer Suchita Prakashan. Okay, in that you have all set of papers. Otherwise, I will give you my notes also. In my notes also, all past examination questions are covered. So that is sufficient for you. Okay, But sir. for other subjects also, you bring scanner. Okay, Okay, sir. ठीक है. Chalo, let's start. So what we have covered in the last session is accounting standard 16 borrowing cost. In borrowing cost, we have seen the meaning. Okay, Ajay Suresh, now you can mute yourself. Borrowing costs are the interest and other costs incurred in the connection with the borrowings of funds, and it includes what you are already aware. In case of foreign exchange, we are going to solve some illustrations today. I have given you some examples in the last session. Students, I have seen that now festival season is going to come, Diwali is going to come, beta, and now it's a major time that you will waste on this, this festival time, and this is how you are going to fail. You are making some preparations for your failure. Huh? So this is my suggestion. This Diwali is not for you. You have to only study because you have to manage all 6 subjects together, and it is not one day process. It's a continuous efforts for at least 5 to 6 months. तो दरवाजा बंद करना ते असं मच्छर येतात. सो ट्रीटमेंट ये ध्यान में रखना कि आपको एक साथ पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं होगा कि एक दिन का ये स्टडी है. ठीक है. सो ये ध्यान में रखना है. नाउ स्टूडेंट्स, in last session, what we have seen, the treatment of the borrowing cost is the qualifying assets and others. And remember the recognition criteria. It is the probable future economic benefit will flow to the enterprise, and cost can be measured reliably. So, and how we are going to calculate the special borrowing rates and general borrowing rates, that we will see today. How many of you have completed study material questions? Okay, at least you read study material questions. How many of you? अरे वाह, so many students. Yes, beta Sampada, unmute yourself. संपदा जी, यस सर। किधर हो आप? हेलो सर। हाँ जी, कहाँ से हो? यस संपदा,
सर मैं घर में हूँ सर। I यहाँ cannot. पे बारिश हो रही है तो No, यस you सर। are. I cannot hear you. Do you have a range मेरी problem? बात No, range problem है. सुन ठीक है. रहे हैं सर। नहीं, आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है. इट्स ओके. म्यूट कर दीजिए. हेलो सर। संपदा म्यूट कर दीजिए. कोई दिक्कत नहीं. Yes. Other students who solved, at least who never answered, can raise their hand who wants to read the question. Yes. New students always welcome. Otherwise, Hardik is there. आस्था. आस्था को बोलना है आज. चलो ठीक है. आस्था जी, अनम्यूट कर दीजिए. सराउंडिंग में आवाज मत होने दीजिए सिर्फ. ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आस्था. चलो स्टार्ट करते बेटा. आस्था, यस सर। कितने क्वेश्चंस किए आपने? सर मैंने सारे कर लिए, इवन टीआई के भी कर लिए, बस लास्ट टीवाई के मैं कर नहीं पाई। अच्छा, अभी मुझे आप बताना कि जो चीजें लास्ट में, मतलब ये लिख के रखना कि व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, now ओ- it is very clear to you, and those concepts विच ठीक यू है सर। लेफ्ट. ओके, मतलब आपको, ओ- आपने समझ गया था पर इतना नहीं था, और वो सिर्फ मुझे साइड में बता के रखना. एट द एंड ऑफ द सेशन विल डिस्कस दैट. ओके. फर्स्ट ओके। ब्रेक में we are going to start with complete the TYK question, all questions means illustrations and TYK questions, and then we will start with some extra questions. ओके सर। Yes. Now tell me, today's session beta, those who have not completed um these borrowing cost concepts, I request you all to attend first that previous session. If you are not clear about the concept of borrowing cost, then beta, it's better to watch my previous session and then you join for this extra question answers. From next session, don't miss a single session. And see, these accounting standards are, though these are interrelated, if you miss any session, then you can join in new accounting standard. No problem in that. This topic is not interrelated. So you can join whenever you want. So those students who are listening me on YouTube in recorded lectures, you can attend our lectures anytime because these accounting standards are not interrelated. Normally, 20% relation is there. Probable that future economic benefit and all these questions. Okay. Maroji, I provided extra questions of एज 13, only one. आस्था जी, बाजू में बहुत सराउंडिंग नॉइज है. ओके सर। अच्छा, ऐसी जगह पे जाके बैठो ना जहाँ पे नॉइज नहीं रहेगा, मतलब आप शांति से बैठ सकते हो. ओके सर, ओके सर, आएगा आएगा। ठीक है. तब तक एनी अदर स्टूडेंट हु वांट्स टू रीड द क्वेश्चन? वीरेंद्र शर्मा, चलिए. Sir, my name is Tambeshwari. It's my father name. ओके. तंबेश्वरी जी, Yes, sir. चलो बोलिए बेटा. रीड द क्वेश्चन. FRM Limited obtain a loan from a bank for rupees 120 lakh on 34 2021. It has It until was utilized as follows. okay, particular rupees in lakh construction of a say 50 lakh. No, don't read 40 amounts. Read only particulars. Purchase of machinery, working capital, and advance for purchase of truck. purchase of trucks. Hmm. Construction of said was complete in March 2022. Uh, the machinery was installed on the date of acquisition. Delivery of truck was not received. Total interest charged by the bank for year ending 31 March 2022 was rupees 18 lakh. So the treatment of interest. कौन से ख्यालों में हो आप? ओके. Yes, नाउ sir. टेल मी. यस बेटा, बराबर है. नाउ टेल मी, Yes, आउट ऑफ sir. दिस विच इज अ क्वालिफाइंग एसेट बेटा?
50 lakh. No, मीन्स पर्टिकुलर्स रीड कीजिए ना, अमाउंट मत रीड कीजिए. हाँ. Oh, sorry. Construction of a shed. Okay. Construction of a shed is qualifying asset, correct? Yes, sir. So on this interest you are going to capitalize or you will transfer it to P&L? नो सर, इस पीएनएल में नहीं जाएगा. तो कैपिटलाइज होगा ना, वही बोलते यस कैपिटलाइज. सर, यस सर, यस सर, कैपिटलाइज क्या होगा. बोलते इसको? कैपिटलाइज. कैपिटलाइज सर. मतलब एसेट में ऐड हो जाएगा, करेक्ट? यस एंड सर. परचेस ऑफ मशीनरी इज नॉट क्वालिफाइंग एसेट, यस सर. करेक्ट है? यस सर. नाउ व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस अमाउंट? 120. 120. 120, correct? And what is the total interest? टोटल इंटरेस्ट 18. 18. So total interest is 18 lakhs and 120 is your rupees in lakhs, correct? 120 is Yes. rupees in lakhs and 18 is your total interest. Interest. So now tell me, how are you going to divide this 18? 50. Yes. So there is a 50. shortcut. There is a Oh, shortcut. I will tell you the shortcut. 18 in, I think overhead is completed or not yet? overhead. ओवरहेड चैप्टर ऑफ कॉस्टिंग आप अटेंड कर रहे हो ना? यस सर, यस सर, हो गया सर. तो हो गया तो 18. इसका आपको शॉर्टकट बताया कैलसी पे कैसे डिवाइड करते हैं? हाँ सर, रेशियो वाला बताया था. हाँ देखो, 18 Yes, को आपको 120 से डिवाइड कीजिए इनटू. 50. अभी कैलसी पे सिर्फ 50 इज इक्वल टू, 40 इज इक्वल टू, 20 इज इक्वल टू एंड 10 इज इक्वल टू. कैलसी कौन सा ऐसा वाला यूज करते हो ना? यस सर, डोंट यस सर, यूज मोबाइल कैलसी. हाँ. यस सर, यस सर. चलो, 18 50. डिवाइड बाय 120 इंटू 50. 50 is equal 7.5. to 7.5. 7.5. Very good. Then just press 40 is equal to 6. 6. Then press 20 is equal to 3. 3. And 10 is equal to? 1.5. So total is 18. Correct? Yes sir. Now, out of this 7.5, you are going to capitalize it. And this Yes 3, sir. you will transfer it to P&L. Correct? PNL. Yes sir. Very good. So, calci shortcut you understood? Yes sir. लिख दो साइड में लगे तो. Those who are not aware about calci shortcut, yes, can write it. ठीक है. तांबेश्वर जी म्यूट कर दीजिए. Okay sir. कहाँ से हो आप तांबेश्वरी? यस बेटा. सर, जन्मभूमि तो राजस्थान है लेकिन गुजरात में रहते हैं. गुजरात में रहते हो. यस सर. हार्डवर्क बहुत करते हो लगता है. हाँ हाँ सर. चलो बहुत बढ़िया. ओके सर. See the presentation. See the presentation. Screenshots you can take at the end. Okay. So this is how you have to present this qualifying asset, non-qualifying asset, interest on qualifying asset and interest on non-qualifying asset. ठीक है. Next. रश्मि जी. Whenever I'm telling, good morning. Whenever I'm telling you to read the question, every student must participate. Okay. This is, you will feel like, face to face lecture, and that is only the reason I'm telling you to read the question. तो नींद में से बाहर भी आ जाते हो. ओके. सुबह का लेक्चर है 7 o'clock. लोग कैसे उठ के आते हैं मुझे पता है. अभी आजकल ड्यू टू मोबाइल की वजह से हम लोग 12-1 बजे तक सो नहीं पाते हैं. बट ये जो सेशन होता है उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए. एंड ये अपॉर्चुनिटी बीओएस ने हम लोगों को दिया है, तो टेक अ बेनिफिट ऑफ दिस. तो जितना हो सकता है रेज योर हैंड. क्या होगा? ठीक है तांबेश्वरी, यू कैन सी कि शी इज नॉट फ्रॉम कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम, मतलब जो उसके एक्सेंट से मुझे समझ में आ रहा है, बट शी इज ट्राइंग एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. चलिए. एंड
मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये कि यू विल पार्टिसिपेट, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो रश्मि जी, यस। सिर्फ एक ध्यान देना, अपने सराउंडिंग में कोई नॉइज ना हो। Yes, यस, sir. स्टार्ट रश्मि जी। XLT began लिमिटेड, construct. एक्स लिमिटेड बोलते हैं उसको, हाँ। X Limited began construction of a new building on 1st January 2021. It obtained 1 lakh special loan to finance the construction of the building on 1st January 2021 at an interest rate 10%. The company other outstanding to non-specific loan were 5 lakh 11% and 9 lakh 13%. Wait a minute. So on 1 lakh, you can write specific borrowing. Okay. I explained in the last session that I'm going to explain you specific borrowing and general borrowing in the next lecture. So what is a specific borrowing? For this construction, they use this 1 lakh, and general borrowing is what? General borrowing is that which is for general purpose, which is for general purpose. Pest controls are there. So general purpose loan is a specific borrowing, and special borrowing is nothing but it is specifically for the construction of that building. Got the concept? Yes, sir. Yes. हाँ जी बेटा, बोलिए आगे। The expenditure that were made on the building project were as follow. 1st January 2001 20 lakh, April में 2 lakh डोंट 50,000. रीड अमाउंट, जनवरी अप्रैल जुलाई दिसंबर, नहीं, ओके, ठीक है। building, yes. Building was completed by 31st December 2020 and following the principle prescribed in accounting standard 60 borrowing cost. Calculate the amount of interest to be capitalized in the past on journal entry for capitalization, the cost and borrowing cost in respect of the building. ओके, सो रश्मि जी, कैन यू टेल मी 1 लाख के ऊपर whether date is given for that? Yes, sir. 1 लाख का लोन का डेट इज गिवन और नॉट? Cost Loan here, loan not dates are not given. not given, yes, sir. Correct? You can write that. Therefore, assume from 1st Jan. Therefore, assume from 1st First, Jan. yes, sir. Okay? Okay. And here dates are given. Correct? Yes. Therefore, use weighted average concept. Weighted average expenditure. क्या यूज करना है आपको? Weighted average expenditure. Weighted average expenditure. You're getting this point, beta? Yes, sir. So now how to calculate weighted average? See, now loan is not given. Correct? Hai? So what is my interest amount? Interest amount on 1 lakh, 10%. 10%. In 5 lakh Correct? 11%. हाँ. Now 5 lakh 11% means 55,000 I am paying the interest. Yes, sir. 5 lakh into 11%. Why you are using calci for this, beta? 9 lakh into 13%. 1 lakh 17,000. 1 lakh 17,000 Yes. plus 55,000. What is the amount? 1 lakh 82,000. 1 lakh 82,000. बराबर कीजिए 1 lakh 17 plus 55, 1 lakh 72,000. No, रश्मि जी, Yes, sir. आपने 72 ही बोला था। इसका सर एक मिनट सर, इसका हो गया सर, इसका भी तो 1 लाख का 10% में टोटल कैलकुलेट कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, वन स्पेसिफिक बोरिंग ये अलग रखो। ओके ओके सर। ओके, एंड जनरल बोरिंग अलग रखो, स्पेसिफिक अलग, जनरल अलग। ओके, 1,72,000 इसका। ऑन विच अमाउंट? इसका वो ऑन 14 टोटल 14 lakhs. ओके, Yes. 1,72,000 ऑन 14 lakhs, तो कितना परसेंट हुआ देखो? 100 1,72,000 डिवाइड बाय 14 lakhs, एंड परसेंटेज की साइन दबाओ।
Yes, 12.2889%. 2857 means 2 digits. So you will take 12.29 because third Yeah. digit is 5 and more. Yes. 12.29%. Correct? Yes, sir. हाँ. Now see, हमें दो इंटरेस्ट रेट मिल गए. Yes. One is for specific borrowing. What is the interest rate? 10%. 10%. And for general borrowing, what is the interest rate? 12.29%. Have you written on Yes. study mat? Yes. स्टडी मैट पे जो भी मैंने लिखा है वो लिख लो. राइट इट डाउन. करेक्ट है? Yes, sir. यस. अभी जनवरी 1 को आपने 2 लाख का खर्चा किया. We will assume it is on 1st January. And nothing is given. We will assume on 1st January. Yes. तो 2 lakhs एक्सपेंडिचर आपको कितने महीने में यूज किया आपने? 12. 12 months. अप्रैल का 9 month. 9 months. So see, dates are different. And dates are different. Therefore, we cannot use ki 2 lakh expenditure. We use it for whole year. Correct? Now 2 lakh 50,000 on 1st April. Barabar. So for Yes. 12 months, if I divide it over 12 months, so it will be, yes, 187 500. 9 months के लिए 2,50,000 है. Yes. So I have to use it for 12 months. Yes. So it will be 187 500. Okay. Yeah. Yes. 4,50,000 6 month. into 6 by 12. Yes. And this is 1 by 12. So 2 lakh equivalent 20. concept I'm going to use over here. 2,25,000. Yes. And this is 10,000. This Yes. is called as equivalent annual expenditure. See, this expenditure total 200, 250, 450, 120. This is for not for the sorry, this 10,20,000 whether we incurred for 12 months or different months. Different month. तो ये 10,20,000 ये हम लोग पूरे साल भर के लिए यूज नहीं कर रहे. We are using this for different months. Okay. Some are for 12 months, कुछ 9 महीने, कुछ 6 महीने, कुछ 1 महीना. तो हमें ये इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज डेट्स आर गिवन. लोन भी वैसा होता तो हमने लोन को भी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया होता. ओके. Okay. सो व्हाट इज माय टोटल एक्सपेंडिचर, इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर? 6,22,500. नहीं, मेरा तो कुछ अलग ही आ रहा है. मेरा 7,12,500 आ रहा है. आपका कितना आ रहा है? आप बराबर कीजिए टोटल. कैलसी में मिस्टेक मत कीजिए बेटा. हाँ, सॉरी 10,000. मेरा इतना ही आ रहा है. 622,500 करेक्ट है. Yes. यस. नाउ सी बेटा, आउट ऑफ 622,500 आपका स्पेसिफिक बोरोइंग कितना है? 1 lakh. 1 लाख. एंड आउट ऑफ 14 lakhs आपने कंस्ट्रक्शन में कितना यूज किया? 5,22,500. 522,500. Correct? So 1 lakh ko you will multiply by 10% and 522,500 you will multiply by 12.29%. 12.29%. तो ये कितना हुआ? 64,000. 10,000. Yes, ये 10,000 to 64,250. 64,215 and total कितना हुआ? 74,215. Yes. See the answer. Okay, so थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ है. Here I use 3 digits. Yes, sir. तो हमारा आंसर थोड़ा सा बदल गया. 3 digits यूज किया तो. ओके. Okay, sir. नाउ सर प्रेजेंट. हाँ, बोलिए. सर इसमें हमने सिर्फ अब हमारा कितना कैपिटलाइजेशन होगा हमने ये निकाला, पर इसमें जो हम और भी जो इसका अमाउंट जो होगा, इस पे चार्ज जो होगा वो हमने पीएल में डालेंगे ना? नहीं, बाकी का इंटरेस्ट का हमें कोई लेना देना नहीं है ना.
वी आर नॉट कंसर्न, वी वांट ओनली अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। बाकी का इंटरेस्ट का P&L में क्यों डालना है वो पूछा ही नहीं है हमें। ओके सर। सो बाकी का इंटरेस्ट का हमारा कोई लेना देना नहीं है बेटा। 1,72,000 ओके। बराबर है, मतलब वो ठीक है। 1,72,000 का 522,500 का 12.29 उतना परसेंटेज हम लोग क्या करेंगे, उतना ही हम लोग कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कैपिटलाइज फुल 1,72,000। गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, एंड दैट इज नॉट ओके। आस्क्ड 1,72,000 का क्या। See the exam presentation. First, you will take a cost of plant. See, presentation is very important. Cost of plant is 10,20,000. Correct hai? यस। Then you will write interest to be capitalized. You don't write this amount of first. Working note 1. What we are going to prepare? Working note 1. Then total interest to be capitalized. Total expenses to be capitalized. Sorry. Total expenses is 1 plus 2. Got the presentation? यस सर। Now, interest to be capitalized. On specific borrowing, full 1 lakh into 10%. And on general borrowings, non-specific borrowing matlab general borrowing, how we are going to calculate? Accumulated वेटेड। expenses, यस। remaining accumulated expenses इनटू वेटेड multiplied by weighted कैपिटलाइजेशन average रेट। cost of capital. What the concept? यस। Yes. Now working note 2 is accumulated expenses. Remaining nahi, average likhna hai yahan pe, average. Average accumulated expenses. So you will multiply by this. You got the columns, serial number, particulars, amount, equivalent months and accumulated expenses. Column समझ में आ गए बेटा आपको? यस सर। Total is 622,500. And then interest rate इंटरेस्ट। also I have given you the same columns exam में. Now see here 12 महीना ही था पूरा का पूरा जनरल बोरिंग, बट एग्जाम में ये हो सकता है कि मंथ्स बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं बेटा? मंथ। Loan dates might be different. And यस then तो you have to use equivalent loan concept. जैसे हमने ये एक्सपेंस के यूज लिए किया ना दिया। एक्यूमुलेटेड का, वैसे हमें इधर भी इक्विवेलेंट हो सकता है इफ लोन 12 महीने के नीचे होगा तो। सो इट्स बेटर यही फॉर्मेट को फॉलो करो। ओके, ओके सर। हाँ, एंड देन यू विल गेट द आंसर 12.285 एंड एवरेज accumulated. So what are important points? सर। Important point is that यस। हम लोग आपसे चाहते हैं कि यू शुड नो equivalent annual expenditure, average accumulated expenditure. So you cannot take directly 10,20,000 के ऊपर interest. You have to take, convert it into accumulated expenses क्योंकि expenditure is not incurred throughout the year, 12 months. Yes, you have different period for different expenditure. Okay, सो यू इनकर्ड इट इन जैन, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर। तो रश्मि जी आपको ये एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस कॉलम बनाना जरूरी है। प्रेजेंटेशन समझ में आया आपको? यस सर बिल्कुल। यस, ये कॉलम्स आप घर पे अच्छे से याद कर लेना, लिख के रखना। आई हैव शोन यू हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। हमने पहले मॉड्यूल पे भी लिख के रखा है, स्टडी मैट पे भी लिख के रखा है। वी हैव टेकन इट ऑन स्टडी मैट ऑल्सो, all these important points. Anyone has difficulty? IMP question. If dates are given, use weighted average concept. And even for loan, we use weighted average concept only, but it is 12 by 12. So you are getting the same amount. Okay, 12 by 12. Otherwise, convert it into equivalent concept. Yes, नीतीश देखते हैं बेटा वो बाद में। चार्जर यस, रश्मि जी थैंक यू। ओके सर। 2 मिनट हाँ बेटा।
Why we add non-specific borrowing का interest in specific borrowing? Because that is also we incurred expenditure we incurred from non-specific borrowing, no? हमने non-specific borrowing में भी incur किया expenditure. ये क्या क्वेश्चन था? मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन. पल्लवी जी, वाई वी एड नॉन स्पेसिफिक बोरिंग इंटरेस्ट टू द स्पेसिफिक इंटरेस्ट, मतलब हमने लोन तो अभी देखो खर्चा तो हमने पूरा जरूरी नहीं है ना कि हमने स्पेसिफिक बोरिंग से ही किया होगा. हमने जनरल बोरिंग भी लिया रहेगा. जनरल बोरिंग मतलब क्या? उससे बाकी के खर्चे करेंगे, पर जितना इसके लिए यूज किया उसको तो ऐड करना ही पड़ेगा ना. अभी आप दिवाली के शॉपिंग को जाओगे, पापा ने आपको 5,000 रुपए दिए, तो 5,000 रुपए में से थोड़ी आप सिर्फ शॉपिंग में से कपड़े ही लेके आओगे. वो जनरल पर्चा के लिए खर्चे के लिए दिया. उसमें से आप हो सकता है कि दिवाली के आपके कंदील लेके आओगे, क्या आप हो सकता है घर में कुछ अगरबत्ती और ये लेके आओगे. तो जरूरी नहीं है ना. यस. पल्लवी जी, एनी डाउट इन दिस? हाँ. तो वी हैव टू कैपिटलाइज दैट एक्सपेंडिचर विच इज we have used for that general purpose expenditure, on expenditure. So general borrowing might be there. Yes, Riddhi ji, do you have any question? You can raise your hand, Riddhi, if you have any question. If you are not getting anything. Yes. So just I'm solving her query. Next. ठीक है. चलो, next student. Please raise your hand, those who are interested to read the question. एक 5-6 स्टूडेंट हैंड रेज करके रखिए. यस. दीपक बागड़े जी, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कहाँ से हो आप? सर मैसूर से हूँ. मैसूर से. चलो, वेरी गुड. Uh, यस. Illustration 3. The company has obtained institutional term loan of rupees 580 lakh for modernization and renovation of its plant and machinery. Plant and machinery acquired under the modernization scheme and installation completed on 31st March 2022 amounted to rupees 406 lakhs. 58 lakhs has been advanced to the suppliers for additional assets, and the balance loan of rupees 116 lakhs has been utilized for working capital purpose. The accountant is on a dilemma as to how to account for the total interest of rupees 52.20 lakhs incurred during the previous year on the entire institutional term loan of 580 lakhs. Now, can you tell me whether this question is similar to illustration 1? In illustration 1, they have given you the bifurcation directly. And here they have given you bifurcation in the theory form. Yeah. Correct? So Yes. they have not given you directly the information. So we will call modernization and renovation as the qualifying asset. Advance to supplier is also qualifying asset because it is advance to supplier for plant and machinery. And working capital is not the qualifying asset. Yes. So what is the interest that you paid? Sorry, it's my mistake. हाँ, okay. Total interest to be okay. 41.76 plus 10.44, 52.2. Okay. ठीक है. Same presentation. Yes, right. First read the. Yeah, any doubt in this? Anyone has doubt? Deepak ji, easy है ये? Deepak ji, why are you? Don't mute yourself. जब तक मैं नहीं बोलता हूँ मत कीजिए. हाँ जी. नहीं सर, बैकग्राउंड नॉइस था इसलिए I had to mute. It's clear? Yes sir. See, so what is the shortcut? So see how many expenditure you incurred: 406, 58,
and and 116. Take a total. yes, 580. 580. 580. 580. 52.2. What is the shortcut of Calci? 52.2 Hmm. Divide by. divided by 580 Hmm. into 406. Into 406 is equal to, then 58 is equal 36.54. to, Then 58 is, divided by equal to. 406 into 58 will give us the. No. Every time you don't have to do this. On Calci, you will do it only once. Okay. Calci can memorize this amount. Yes, sir. So every time don't do this calculation. Yeah. So what is the answer? 36.54. Hmm. 5.22. Hmm. 10.44. This is capitalized, and this is transferred to P&L. PNL. Correct? Yes. Yes. Calci shortcut you understood, no? Yes, sir. Okay. Chalo, very good. Illustration 4. Sorry. Thank you. Thank you. Harshada Bhanushali. Hello. Harshada beta. Yes. Yes, Yes. sir. Good morning. Good morning. कहाँ से हो? Maharashtra, Mumbai. अच्छा, मुंबई से हो, चलो बोलिए. Illust- Illustration 4. Take Limited has borrowed rupees 30 lakhs from State Bank of India during the financial year 2001 and 2. The borrowings are used to invest in shares of Give Limited, a subsidiary company of Take Limited, which is implementing a new project estimated to cost rupees 50 lakhs. As on 31st March 2002, since the SAT project was not complete, the directors of Take Limited resolved to capitalize the interest accruing on borrowings amounting to rupees 4 lakhs and add it to the cost of investments. Comment. क्या लगता है आपको? Now I will give you the scenario. This is a Tech Limited. Yes. They borrowed from, assume, any bank, SBI. So given bank is given. Tech Limited invested in the shares of Give Limited, and they have done expenditure on this qualifying asset. Now they are asking you whether Tech Limited should record this interest. Why? Because they have to pay interest as capital expenditure. You got this scenario? Yes. हर्षदा, Yes, sir. आपको सिनारियो समझ में आ गया कि भाई एसबीआई टेक लिमिटेड को दे रहा है, टेक लिमिटेड गिव लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रहा है, गिव लिमिटेड Yes. क्यूए लिमिटेड क्वालिफाइंग एसेट कर रहा है एक्सपेंडिचर. अभी ये एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट में कर रहा है, इसलिए टेक लिमिटेड ने ये इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए. सही लग रहा है आपके दिमाग को? No, sir. सपोज ये टेक लिमिटेड ने डायरेक्टली क्वालिफाइंग एसेट में किया होता, Yes. देन यू कैन कैपिटलाइज. वाया वाया नहीं चलेगा भाई. Yes, right. Okay, so it is not allowed. If you are directly investing in capital expenditure, qualifying asset, you are constructing qualifying asset, then it's okay. If you are going through investment, it is not allowed. Got the concept? Yes, sir. It is S13 आएगा टेक लिमिटेड के लिए, investment in shares. S16 is not applicable over here. ठीक है? Yes, sir. Read the answer. So how to read the answer? Sorry. See, it is not, don't write like this. It is not allowed, or it is not the capital expenditure. It is revenue expenditure. No.
You have to write it in the proper way. Facts of the case, provision and conclusion. Read it. Facts of the case. In the given case, Take Limited has used borrowed funds for purchasing shares of its subsidiary company Give Limited. Rupees 4 lakhs interest is payable by Take Limited to State Bank of India. Provisions of AS. As per AS 16, borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, or production of qualifying assets should be capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as expense in the period in which they are incurred. Qualifying asset is an asset that takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Cost of investment includes acquisition charges such as brokerage fees and duties. Conclusion. Thus, as per the facts of the case, as per provisions of AS, interest payable cannot be called as acquisition charges, therefore cannot be constituted as cost of investment. Since shares are ready for its intended use at the time of sale, it cannot be considered as qualifying asset. Therefore, the directors of Take Limited cannot capitalize the borrowing cost. Very good, beta. Got the concept? How to write the answer? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया. नहीं, ये कंक्लूजन में कहाँ तक हुआ था? Yes, sir. Fourth point रह गया था. हाँ. It has to be charged to the statement of P&L for the year ended 31st March 2002. Okay. ठीक है. चलो. Now we'll solve question 9. TYK. Come to TYK question. Yes. Yeah. Do not unmute. Do not mute. Yes, sir. Arshada, continue. Yes, sir. On 1st April 2001, Amazing Construction Limited obtained a loan of rupees 32 crores to be utilized as construction of sea link across two cities. Work was held up totally for a month during the year due to high water levels. Purchase of equipments and machineries, working capital, purchase of vehicles, advance for tools, cranes, purchase of technical know-how. Total interest charged by the bank for the year ending on 31st March 2002. Show the treatment of interest by Amazing Construction Limited. $80 lakhs means 0.8 crores, correct? Yes. If you do not know how to convert it, simply divide by 1 crore. Bol. Okay. Okay. And then you will get the 0.8 crores. So what is the Calci shortcut, my dear? Sorry, sir. What is the Calci shortcut? 80,000 divided by 8.8 crore. Why 80,000? yes, 0.8. 8 crores. Divide by? Divided by 32. 25 is equals to? Into 25 is equal to, 25 then is 3 is equals to? 2 is equal 2 to, is 0.5 is equals to? equal to, 0.5 is equal to, 0.5 is equals to? and 1 is equal to. Tell me Yes. answer. So actually I don't have calci. You do not have Calci? Yes, sir. A war without gun. कैसे क्या भानुशाली जी, ऐसे चलेगा क्या? कैल्सी नहीं है आपके पास, रोज के इतने लेक्चर्स चल रहे, कब गया कैल्सी आपका? So 0.0125. क्यों नहीं है कैल्सी? No, sir. Actually, numbers are showing blur on calci. That's why. ले लीजिए दिवाली के शुभ मुहूर्त पे और 10 Yes, दिन sir. बाद.
No, sir. जल्दी से जल्दी, बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, 150-200 रुपए का आता है, सिंपल वाला ही Okay, sir. लीजिए। चलो ठीक है। सो आई होप यू गॉट दी, हाँ इसमें से टेल मी विच इज द क्वालिफाइंग एसेट। Construction of ceiling across two cities. हाँ, Then, वी विल एज्यूम परचेस ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी एज अ क्वालिफाइंग एसेट। रुको, हमारी डियर इंस्टीट्यूट ने क्या किया देखने दो मुझे। नहीं, उन्होंने परचेज मतलब रेडीमेड लिखा है, ओनली वन एक्सपेंडिचर ही उन्होंने क्वालिफाइंग किया है। yes, sir. सो यू हैव टू राइट नोट एंड यू कैन राइट दिस नोट, हाँ मतलब हम दोनों को मार्क्स दे देंगे। नहीं, इट इज परचेस, नो नॉट कंस्ट्रक्टेड, तो वी विल एज्यूम इट इज रेडीमेड। ओके, तो डोंट राइट Yes, sir. नोट, इट इज नॉन क्वालिफाइंग ओनली। ठीक है, Yes, sir. इजी। Yes, sir. हम्म, पी एंड एल में ही जाएगा ना वो, अभी इधर लिखते हैं वही फॉर्मेट, इंट्रे हम लोग बार बार वही फॉर्मेट लिख रहे हैं, सो वही फॉर्मेट रहेगा, सेम फॉर्मेट। टीवाई के 10। यस, थैंक यू। सानिया, सानिया गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हो? सर मेरठ, ओके, उत्तर प्रदेश। यस यस बेटा, Okay. ठीक है बोलिए। TYK 10. Rainbow Limited borrowed an amount of rupees 150 crores on 1 April 2001 for construction of boiler plant at the rate 11% per annum. हम्म, The plant is expected to be completed in 4 years. Since the weighted average cost of capital is 13% per annum, the accountant of Rainbow Limited capitalized rupees 19.5 crores for the accounting period ending on 31st March 2002. Due to surplus fund out of rupees 150 crores, income of rupees 3.5 crores were earned and credited to profit and loss account. Comment on the above treatment of accountant with reference to relevant accounting standard. ओके, नाउ सी, दे borrowed the loan, Yes, sir. they multiplied by weighted average rate, Yes, sir. so weighted average rate is allowed or not? Sir, here not allowed. Why? Sir, Because you have to consider actual rate, yes, sir. and I borrowed at the rate of 11%, then why I am considering cost of capital rate? Cost of capital, have you done with the cost of capital chapter beta, Sania? Yes, sir. In which subject? Sir, financial Management. management. What is the formula for KD? Sir, KD. Huh? Sir, the अच्छा, amount we have paid divided by total amount we get. KD मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स बेटा, Yes, sir. कुछ याद नहीं है? देखो बेटा, ऐसे फॉर्मूले याद करने होंगे, एक सिर्फ झलक बताता हूँ तुझे कैसे याद करने का। Sir. याद हो गया तो देखो, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 - टी प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी अपॉन 2। इस फॉर रिडीमेबल, इरिडीमेबल होगा तो केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। पीडी होगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इफ रिडीमेबल, रिडीमेबल होगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी अपॉन 2। आफ्टर दैट केई के चार फॉर्मूले हैं कि डिविडेंड अप्रोच डी वन अपॉन पी जीरो, विद ग्रोथ होगा तो प्लस जी, अर्निंग अप्रोच अर्निंग अपॉन पी जीरो प्लस जी, सी ए पी एम आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, एंड रिटेन अर्निंग्स अप्रोच होगा तो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रियलाइज डील अप्रोच, मतलब रियलाइज डील अप्रोच में प्रेफरेंस, सॉरी डिविडेंड प्लस
RV माइनस NP डिवाइड बाय NP, मतलब P0, P1 माइनस P0 अपॉन P0। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ता है। एंड देन KO बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, हार्डली 5 मिनट का चैप्टर है, बट यू हैव टू रिकॉल दिस एवरी डे। 1 मिनट मुझे लगता है याद करने को, ऑल फॉर्मूले। एंड ये फॉर्मूला की लिस्ट बनाओ इन कॉस्टिंग एंड FM। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गिविंग यू दिस गाइडलाइन बिकॉज सी हियर कैपिटलाइजेशन रेट का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वर्डिंग आया, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें वहां पे लगेगा। एंड द स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू वार्निंग, you treat it like warning. If you are not recalling this formula every day, you are going to suffer in exam. And believe me, it takes maximum 1 minute, 2 minutes, 3 minutes for every chapter, hardly 24 minutes. Alternative days में you can do one day cost of capital, one day capital structure, one day investment decision, like this. और सानिया जी, ये आपने नहीं किया तो बेटा लास्ट में बहुत पछताओगे। मतलब अभी ये मैंने इसलिए आपको पूछा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर हुआ क्या, और आपको आता है बट आप फॉर्मूले रिवाइज नहीं करते हो ना, इसलिए भूल जाते हो। ओके, ओके सर। रिवाइज करना पड़ेगा आपको ये सब। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो शुड आई कंसिडर दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल अप्रोच का? नो, नो सर। आई वोंट कंसिडर दैट। ठीक है। सो हाँ, तो 150 करोड़ का लोन लिया है ना, वही अमाउंट हम लोग 11% ही करेंगे बेटा, तो 16.5। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम? Sir, we deduct it. We deduct it, don't transfer it to P&L. So both treatments are wrong. Multiplying by 13% is also wrong, and credited to P&L is also wrong. Okay, so read the answer. Facts of the case. Rainbow Limited borrowed an amount of rupees 150 crores on 1 April 2001 for construction of boiler plant at the rate 11% per annum. The plant is expected to be completed in 4 years. Provisions of as per AS 16 borrowing cost states, to the extent that funds are borrowed specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the amount of borrowing costs eligible for capitalization on that asset should be determined as the actual borrowing cost incurred on that borrowing during the period less any income on the temporary investment of those borrowings. The capitalization rate should be the weighted average of the borrowing costs applicable to the borrowings of the enterprise that are outstanding during the period other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. Conclusion. Thus, the treatment of accountant of Rainbow Limited is incorrect. Amount of borrowing cost capitalized should be calculated as follows. Actual interest 16.5 crores less income on temporary investment from specific borrowings 3.5 crores. Borrowing cost to be capitalized during year 13 crores. Chalo beta. So you got the answer? Yes, sir. Actual borrowing cost you should incur. And whatever the income you generated, it should be deducted. We already written this. Very good. Chalo. TYK 11. That's Mukesh. Harish Construction Company is constructing a huge building project consisting of 4 phases. IMP question. Cash expenditure. Acha. Phase 1 and phase 2 will be started soon as they are completed. एक ही मिनट, हाँ बेटा, एक ही मिनट।
चलो, कैश एक्सपेंडिचर 10, 30, 25, 30. बिल्डिंग परचेस, टोटल एक्सपेंडिचर। भाई साहब, आपने एक फेज चालू किया ना, फेज चालू किया तो बिल्डिंग भी परचेस करना पड़ेगा एंड कैश खर्चा भी करना पड़ेगा, कुछ उसके ऊपर मरम्मत करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू रूटीन एक्सपेंडिचर, सो यूर एक्सपेंडिचर इन कैश, दिस इज इन फेजेस, नो? तो यू आर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, so building का construction cost is 24, 34, 30 and 38, and other expenditure, cash expenditure you incurred on that, it is a phase expenditure. So total expenditure in all phases will be 221, but I have taken loan of only 200. During the mid of the current year, phase 1 and phase 2 I have operational, means is ready to use, so you should stop that kharcha to record as a capitalization. And what is the total expenditure that you are going to capitalize? Very simple. What is the interest amount? $200 into 15%. 30. Why are you using calci for this? I don't understand. 15% के लिए कोई calci यूज करता है क्या? डायरेक्टली 15 टू जा 30, इतना सिंपल है. तो 30 lakhs. What is the total of this expenditure? 34 plus 64. 98. And what is total expenditure of 3 and 4? 3 and 4 का बताइए. 123. So total cost is 221. Now 2,21,000, correct? Eh? Now if I divide this interest 30 lakhs, in which ratio I am going to divide this? Phase 1 and phase 2 98, and 123 is the phase 3 and phase 4. So take on calci, 30 lakhs divided by 221 into 98 is equal to. Got the concept? 98 है ना? And what is phase 2 का? 98 हुआ, and 123 is equal to, check, 166,9683. Correct है? And this is 13,30,317. अभी उसका भी हाफ जो है ना, वो कैपिटलाइज होगा. करेक्ट? एंड 3 and 4 आर रेडी टू यूज, तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सॉरी हाफ एक्सपेंडिचर हो जाएगा फेज 1 एंड फेज 2 का. एंड 1669,683 ये अभी भी तैयार हो रहा है. तो ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा. ओके, फुल्ली कैपिटलाइज. गॉट द कॉन्सेप्ट? इजी था? इजी था क्या? यस रचना जी, इजी और डिफिकल्ट? इजी था सर. आया था आपको ये? सी बेटा, expenditure is 98, correct? And phase 3 and phase 4 is 123. Now your interest is 30 lakhs. On 30 lakhs, 98 divided by phase 1 and 2. 98 divided by 221 is the total expenditure. This will be whatever the amount you will transfer 6 months in capital expenditure and 6 months is profit and loss account, revenue expenditure. And phase 3, phase 4, 30 lakhs is the interest amount, into 123 is the expenditure on phase 3, phase 4, and 121, and fully capitalized. Whatever amount, fully capitalized.
वरना क्या गड़बड़ है इसमें, इतना सिंपल इक्वेशन है. This information is to confuse us. Cash expenditure and building expenditure. Beta, we never capitalize interest on 221. No. If my loan is lower amount, I will capitalize only 30 lakhs. Now, I have not borrowed it. So what is the criteria? Good question. So should I take it on 2,21,000 into 15%? No. Because my actual borrowing cost I will consider over here, which is less than. See, now the question number, now this is very critical point. In question number 2, my borrowing is 10 lakh, sorry, my borrowing is 14 lakhs and 1 lakh, but my expenditure is lower. So I capitalize the amount on 10 lakh 20,000 on expenditure. ऑन एक्सपेंडिचर. अरे मेरा लोन जो था वो 14 लाख प्लस 1 लाख था इलस्ट्रेशन 2 में, पर मेरा खर्चा कितना था? 10,20,000. तो मेरा खर्चा कम था और मेरा लोन ज्यादा था, तो मैं 10,20,000 को कैपिटलाइज करूंगा. इसके ऊपर का इंटरेस्ट अमाउंट, इसके ऊपर का इंटरेस्ट अमाउंट, आई एम गोइंग टू कैपिटलाइज इंटरेस्ट ऑन 10,20,000 एंड नॉट ऑन लोन अमाउंट. एंड हियर इन दिस क्वेश्चन, very important, first check my loan amount. It is 200 and what is my expenditure? 221. So I will charge interest on 221 or 200, 200, whichever is lower. So in illustration 2, you have to be very careful. Loan amount and expenditure amount, whichever is lower. Here loan amount is lower in TYK 11, and in illustration 2 एक्सपेंडिचर अमाउंट इज लोअर. गॉट द कॉन्सेप्ट? जी सर. तो आप लोग 30 लैक्स पे लेने वाले. छोटी छोटी बट मोटी बातें. न्यूली एडेड क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन है, सेम. Yes, sir, similar. Now you only solve. This is newly added question. All of you solve this question. This is added in your material for May 25. Yes, बेटा TYK 9 की तरह ही है, सेम है. Only detailed information is given. रचना जी बताइए आंसर. So first of all, we'll divide which are qualifying asset and which are not qualifying asset. What is So, your interest amount? sir, What is your interest amount? interest to be capitalized. Now instead ask you a different question, thoda sa. This is qualifying asset. Yes, sir. First one is qualifying asset, rest others are non-qualifying asset because it's ready. What is interest? We have borrowed 100 lakhs into 12%. Wrong. When you borrowed it? Okay, 1/6 So how many months? into 10 by 12. 10 months. Don't consider June. April and May gone. So you have only 10 months left. Yes, sir. So it is 10 lakh minus you invested ideal funds. Ideal funds you invested and you got interest. So only 950 will be capitalized. So instead check your two concepts. One, are you able to calculate interest amount? Yes. Second, are you able to calculate idle amount ka interest? Yes. That is we are going to deduct it. Got the concept? Yes, sir.
गलती हुआ था ना आपका, ये देखा ही नहीं आपने ये तो। सर डेट मिस कर दिया था। हाँ, सो दोनों पॉइंट मिस कर दिया आपने और डेट ही मिस कर दिया इसका। सो व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट नाउ? 9.5 आपको ये करना है। व्हाट इज द कैलसी शॉर्टकट, टेल मी। टोटल 9.5 डिवाइडेड डिवाइड बाय बाय 100 इंटू, इंटू 40 हाँ, इज इक्वल टू कीजिए 9.5 डिवाइड बाय, इंटू 30। वापस इंटू, नो नो, नो इंटू डायरेक्टली 30 इज इक्वल टू हाँ, यू आर सेइंग 30 इंटू 30 इज इक्वल टू, नो, 2.85 पी एंड एल, ये सभी 1.425 0.19 1.235। सीक्वेंस क्यों चेंज हो गया? ये ऊपर डाल देना बेटा। ये चेंजेस है कुछ। ओके बेटा, सो रचना जी यस सर। नाउ क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। when you solve this question, points that you are not considered, सर इस क्वेश्चन में तो वही इस क्वेश्चन नहीं, ओवरऑल 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 सर बताइए। स्टडी मटेरियल से जब पढ़े तो सॉल्यूशंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, बट हियर आपने जैसे कैलकुलेशंस वगैरह दिखाया वो थोड़ा इजी लगा। ओके एंड उसके बाद जब स्टडी मटेरियल से पढ़े, मैं 100 पेजेस का बुक लिख रही थी और साइमल्टेनियसली उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो रिलेटेड लग रहा था सर। ओके, वेरी गुड। वाई नीतीश, क्लास खत्म हो गया बेटा? अभी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, क्यों क्लास खत्म होगा इतने जल्दी? आज तो एस 10 भी करना है हमें। क्लोजिंग रिमार्क मतलब ये, अभी ऑल इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हुए इसलिए मैंने क्लोजिंग लिया फॉर इलस्ट्रेशन पार्ट। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव एक्स्ट्रा में? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फॉरेन करेंसी का एक भी क्वेश्चन कैसे नहीं रखा है, क्या पता। एक्सचेंज डिफरेंस। क्वेश्चन 13 सॉल्व करो बेटा। ये आई एम गोइंग टू अपलोड दिस लिस्ट एंड आई विल गिव यू टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट। सो दिस, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर टोटल? I think 16, 14, 13, 14 questions. I'm not able to solve each and every question. So now you are aware about the presentation. So बेटा ये क्वेश्चन कर लेते हैं। Read this question रचना जी। This question is not in study material. I will write this. Okay, ठीक है, चलो Gagan read. Cooperative Society Limited has borrowed a sum of US dollar 12.50 million for its solar energy project at Libor, offered at 1% plus 4%. Interest is payable at the end of the respective financial year. So what is The- LIBOR? LIBOR is London Interbank Offer Rate. See beta, in India, I will explain you this LIBOR. In India, we have RBI rate. Now see, whether every bank has same rate beta, No, sir. loan rate, Rachna. No, sir. It has So different rates. bank has to follow RBI guidelines. RBI will give you base rate, Mm-hmm. Yes, minimum sir. rate, and they will add their margin. Who will add the margin? Banks. They are also Yes, doing one type of business, no? They also have yes, to pay deposit holders. Okay. So we have Mumbai Interbank Offer Rate, MIBOR. ठीक okay. है? So Yes, sir. LIBOR and MIBOR.
टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, वी इन फॉरेन वी हैव लंडन इंटरबैंक ऑफर राइट. डोंट वरी इफ इन exam this type of wordings, better please do not have any fear. You can easily tell yourself that this is 5%. What is the foreign exchange rate, foreign interest rate? It's a 5%. The concept. Yes, sir. And in India, sorry, what is the exchange loss? 52 and 55. So what is the exchange loss? 3. 3 rupees. And in India, if they borrow it, what is the interest rate in India? 11%. 11%. तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि बेटा आपको ये सर एक एग्जाम्पल किए थे. अभी देखो, इंडिया में आपने लोन लिया होता तो डॉलर 12.5 Yes, sir. 2 into 52 rupees exchange rate At on the the date beginning. of loan. Yes, sir. Okay, and 11%. So इंडिया में कितना होता था बेटा? 715. सॉरी, रुपीस 71.5 आया ना. Yes, sir. हाँ, अभी बाहर कितना इंटरेस्ट लगेगा बेटा अपने को? 12.5 into 4%. And when are you going to pay this interest? Bahar? End After of 1 the year. So financial after year. 1 year, what is the rate? Exchange rate? 55. So now what is the amount of interest that you paid in Indian currency to foreign? So is it 4% or 5%? Sorry, 5%. My mistake. Yes, you're correct. 34.375. And what is the exchange loss? 3 rupees, no? Yes, sir. 37.5. So what is the total interest amount plus exchange loss? 71.87. So now whichever is lower. So how much you are going to capitalize? 71.5. Because ये आपका अमाउंट है. इंडिया में सस्ता पड़ता था, cheaper in India. 0.37. 0.375 you will transfer it to P&L. P&L. 0.38. Easy? Yes, sir. बहुत easy लगा क्या आपको ये? Yes, sir. सेम था सर, सिमिलर था जो कि आप करवाए थे. ओनली थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है. मैं क्या करता हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इंडियन रेट प्लस फॉरेन, both interest plus exchange loss. But institute presentation is like Indian amount, foreign currency का लोन, नोशनल सेविंग. नोशनल सेविंग मतलब इंडिया में लिया रहता तो महंगा होता था. And then you will compare with exchange loss and borrowing cost, whichever is lower. Okay, so aggregate borrowing cost is 34.38 plus borrowing cost 37.2 plus 5, and the difference between two, notional saving and exchange difference. If exchange difference is higher, ये कब applicable होगा? If exchange difference is higher. Only if exchange difference is higher than notional saving, तो ही P&L में डालना है. नहीं तो zero will be in P&L. If notional saving is higher, P&L में zero. What the concept? Exam Yes, sir. presentation. चलो, solve one more question. Everyone by their own, beta, by own. I'm not going to tell you the answer. चलो everyone. Rachna ji, should I take these extra questions or not?
You should take, sir. क्यों रे बेटा, डिफिकल्ट होते हैं? नहीं सर, थोड़ा प्रैक्टिस होता है, नॉट नॉट ऑल, जो थोड़ा लगे कि हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, तो अगर सिमिलर है तो वी कैन डू इट सर। बेटा इंस्टीट्यूट आजकल आपको अलग लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है, सो इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल रहा हूँ ये, एंड प्लीज सॉल्व ऑल दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू अपलोड इट, क्योंकि 2 दिन से मेरा बंदा नहीं था, तो आई विल अपलोड इट टुडे। ओके सर। ओके। यस, साई चरण, डू यू हैव एनी डिफिकल्टी बेटा? Good morning, sir. नो सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। In that foreign exchange rate, 52 is the exchange rate when we borrowed a loan, right, sir? In that case, it is only for 1 year. What if I assume it is for 5 years? If I I will tell assume, you, we have one question on that. okay, fine, sir. Yes. You solve this question. Normally, institute will ask you this type of question, but yes, I will take your question. Don't worry. Okay, sir. पेन देना, पेन पेन, ब्लू, ब्लैक। Sai Kiran, first solve this question. Show pen. After completing the answer, raise your hand. सॉरी, आंसर दे दीजिए, ठीक है? कसं का आन्सर इट? नको रे बघूस, कर ना तुझं तुझं, काय ना मला कळत नाही प्रत्येक वेळेला काय याच्यात आहे अरे. सी द आन्सर, $10 lakhs, correct? Just multiply. Every time you are taking time, I don't understand why. What is the exchange rate when, suppose if I borrowed in India, किससे मल्टीप्लाई करूं, 56 या 62? 56. 56. What is India interest rate? 10.5. ये नहीं आता क्या आपको सर्वेश? बोलना रे. What is the amount? 58,80,000. 58,80,000. Now in foreign, कितना लोन है? 10 lakhs. What is the interest rate in foreign? 4%. 3% plus 1%, 4%. 4%. And when are you going to pay it interest? At the end of the Year end. So you will multiply by 62. 62. 24 lakh 80,000. And what is the exchange loss? 62 minus 56. 6 रुपया ना? Yes, sir. 60 lakhs. 84 lakh 80,000. So 26 lakhs you are going to
पी एंड एल में इतना डिफिकल्ट है? हाँ बेटा, नहीं सर। अमाउंट बड़े आ गए तो मैं डर गया। क्या आंसर है ये, मतलब जाने दीजिए, छोड़ो, अभी क्या बोलो ये। 26 lakhs, इजी। यस सर। नेक्स्ट। Now you can do this question by your own. Huh? If different interest rates are given and exchange loss is given, all three different situation in one question. Okay, this is the master question, 10 number, but this is similar. Okay, you can do this by your own. This 9 number is very important. The 9 number is very important question. Rachna, read. Sangam Limited has undertaken a project for expansion as per following details. Hmm. So, plan Plan actual and actual expenditure. So what are given? Plan, expenditure and actual. What do you think? Which expenditure we consider? actual, sir. Actual. Okay. The company pays to its bankers at the rate of 12% per annum, Hmm. interest being debited on a monthly basis. Monthly basis means 1% per month हुआ. Yes, sir. 1% मतलब दो zeros उड़ा देने के, कैंसल दो 2 zeros. 10% मतलब कैंसल 1 zero and 1% मतलब कैंसल 2 zeros. Easy means 2 lakhs के ऊपर only 2000. 1000. Hmm. During the half year, the company had rupees 10 lakhs overdraft up to 31st July. Okay, Surplus wait. ओडी कितना? 10 lakhs. 10 lakhs. Next. Surplus cash in August and again overdraft of rupees 10 lakhs from 1st September. Surplus and again OD. 10 lakhs. Hmm. The company had a strike during June and hence could not continue to work during June. Strike. Hmm. Work again commenced on 1st July and all the works are completed on 30th September. Assume that expenditure was incurred on first day of each month. Calculate the interest to be capitalized, giving reasons whichever necessary. You got the question? Yes, sir, kind of. Kind of क्या है इसमें? Overdraft Is will be less if there is no capital expenditure. If no kharcha, no OD. yes, So whenever there is no expenditure, there is no interest. Correct? yes, sir. The board of directors, they have considered 3 months as a substantial time. Okay, it's their planning. As a chartered accountant, I cannot force them. I will write only in notes that they consider 3 months as a substantial time and it should be 12 months. But ठीक है अभी जो उनको लगता है वही. Now see what is the actual expenditure in April? 2 lakh. 2 lakhs. Actual expenditure. So at the beginning 0, total 2 lakhs. Say yes or no. Yes, sir. What is the interest amount? Wow, per month 1%. 1%. So it is 2000. Yes, sir. So what is my cumulative amount? 2000 plus 2 lakh, 2 lakh 2000. Okay. What is the next month expenditure? May? 3 lakh. 3 lakhs. What is the total amount? 5 lakh. 5 lakh 2000. Correct? 2000. Yes, sir. Both, na? 2 lakh 2000 plus 3 lakh. 3 So lakh. how Yes, much sir. interest? Because I am using that facility. I am not paying anything. Yes, I'm sir. including expenditure, so I'm using that facility. 5020. Correct? Yes, sir. Okay.
Now this amount is getting carry forward, Yes, sir. To but June. on no actual expenditure, but previous expenditure I have to incur that interest, no? Yes, sir. So 5070 के ऊपर 1%. 205070 is interest. Yes, sir. So total is 512090. जुलाई महीने में भी आएगा, Carry forward. इंटरेस्ट आएगा, ये आएगा 5121. इंटरेस्ट का मीटर तो चालू है ना अप टू जुलाई. Yes, sir. Then in August there is a surplus. Yes, sir. Surplus है ना? Yes, So sir. no interest, zero. And in October, September, 13 OD lakh है. 17,211. Yes, sir. Okay. But what is my sanction limit? What is my sanction limit? Sanction limit is only 10 lakhs. Lakhs. Say yes or no? Yes, sir. तो यहां पे मेरा गलत हो गया एक्चुअली. तो सैंक्शन लिमिट 10 lakhs है, तो कितना मेरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? ओनली 10,000. ठीक है? Okay, sir. जुलाई का इंटरेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट. June and July. हाँ, पर इतना ध्यान में रखो, स्ट्राइक के केस में तुम्हारा इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा. स्ट्राइक कब हुआ था? जून में. जून में. सो ये पीएनएल में जाएगा एंड 10,000 ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा. ये कैपेक्स जुलाई में भी कैपेक्स. दो expenditure is not incurred, but capital expenditure is there. And cash surplus means what? You have surplus cash, so you have not taken OD in that month. Got the concept? Yes, sir. Yes. I will update this So answer. if you have not. हाँ, ये आंसर अपडेट करके मैं आपको भेजता हूँ. So this is one of the important question. ये भी इंस्टीट्यूट पूछ सकती है. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट. 7 नंबर. यू डू बाय योर ओन इफ टाइम परमिट्स. अदरवाइज कीप इट इन ऑप्शन. 7 नंबर क्वेश्चन क्लास में नहीं ले पाऊंगा. 1, 2, 3 are theory questions. You can read it. Okay. So it is similar to our TYK question, that investment amount. 2 number is also inventory का question है. 3 number, sorry. 5 number entry का question है. What is the entry? Interest to interest payable and interest payable to bank, and थोड़ा कैपिटलाइज होगा, थोड़ा पी एंड एल में जाएगा. सो यू विल अंडरस्टैंड दी कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस. 6 नंबर इज फॉर कैपिटल एक्सपांशन एंड यू आर यूजिंग डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट, ये आपका अलग अलग है, 2 बैंक्स से लोन. सो जनरल बोरिंग रेट निकालना है. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. स्पेसिफिक लोन एंड ये क्वेश्चन है. सो यू कैन डू बाय योर ओन. 7 नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये आप ही को करना है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट. 8 number is a theory question, easy again. 9 number is already covered. 10 number is foreign exchange का question. 11 number again call foreign exchange question. हाँ, but only when installments are in Sai Charan's question. So now Sai Charan, you can read this answer, you will understand it. Don't worry, it is very easy. This is again, we already completed phase 1 and phase 2. Only capital grant is received, that is deducted as per AS12. So you can read the answer and you'll get this. Okay. And 13 and 14. And we have finished with this. All illustration, all important illustration points we have considered. So friends, एक्स्ट्रा और कुछ क्वेश्चंस थे जो पास्ट में एग्जाम में आके गए हैं. एक सेकंड, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल डू. समरी क्वेश्चंस में
कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस थे। We're done this question. Specific loan. Yes, beta. So Raj company का तो question is easy now. It's a loan amount. This is like construction of a battery building qualifying asset, and other two are non-qualifying asset. We already have seen this idle fund ना, अभी किया था ना हमने क्वेश्चन, तेरा डेट Yes. गलत हो गया था, हाँ सर, न्यूली right. एडेड क्वेश्चन। हाँ, दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू योर स्टडी मैट क्वेश्चन। Yes sir. एक इलस्ट्रेशन आई थिंक 2 ना, इलस्ट्रेशन 2 सेम ही है। दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी कवर्ड, ये Yes भी sir. सेम है। ये थोड़ा सा अलग है, प्री इंटरेस्ट है, ये आप लोग ब्रेक में सॉल्व कर दीजिए। ओके, आई विल गिव यू ब्रेक एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एट 9 AM। ओके, हम लोग इसको 9 AM को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली आई विल शो यू द आंसर एट 9 AM। ठीक है, दिस क्वेश्चन, ये इसी को ब्रेक का ये मत दीजिए, ये बच्चे सॉल्व करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स। एंड दोज हु आर वाचिंग इट ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर, बेटा आप यहाँ पे साइड देखो 8:39। सो यू हैव एग्जैक्टली 20 मिनट्स का ब्रेक, और 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद आई एम गोइंग टू टेक दिस आंसर, सॉल्व दिस क्वेश्चन, और हम लोग एस 10 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो रेस 10 में कितना हुआ था मुझे बता देना, आई फॉरगॉट दैट, तो मुझे मैं वो कवर कर लेता हूँ एस 10 के क्वेश्चंस। इंटरेस्टिंग था रचना जी पूरा? यस। एस 16 इजी था, डिफिकल्ट था? रचना, हार्दिक कैसे था बेटा एस 16? सर मजेदार था, मजा आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो इट इज वेरी इजी नाउ। चलिए, तो ब्रेक मत दीजिए, आप यही स्क्रीन पे रहने दीजिए, 20 मिनट के बाद हम लोग मिलने वाले हैं। चलो। गाडीवर जाऊ, 1401 पहिली बिल्डिंग, नाही ते 1401 मध्ये जा, 1401 देखील थोरात गाडीची किल्ली घेऊन जा त्याच्यात, हे घे, हे घे, हे घे, तुला गाडीत नाक सोडणार नाही, फोन कर मला, पटकन यायचं।
चलो लेट्स स्टार्ट। क्या आंसर आया? यस, yes, Sai Kiran, do you have any doubt? That in foreign exchange first problem I had doubt, sir. Hmm. In that for Indian loan calculation we have to take a loan rate 52 rupees, na? Hmm. That how much was taken there? 52 only. I have taken 52 only. That then we have to Can take 32 plus 37.5, 70 lakhs we have to do, sir. rewatch that part from YouTube. We have to finish S10 also. No, 52 only finished we it. have taken. No, in that solution I'm having doubts, sir. That you have told 0.38 to be done like that, you told capitalization. Huh. I am having doubt for whether it is to be 70 or that 0.38. That is my doubt, sir. Whether this is, yeah. You got the second question, correct? That No, LIBOR ka second question, you got no, the no. correct answer, no? Sir, I got concept, sir. I understood the concept. In that, how much to be capitalized, that is my doubt, sir. ठीक है, I will show you the answer. Otherwise, I'm going to share it at the end, so you can check it out from that. Sir, you're not understanding me. Okay. It is Because question I have to 13, cover sir. S10 question also, so we have very less time. Okay, so otherwise we have to invest. If at the end, if I'm getting a chance, I will tell you the answer. Okay, I'll show you the answer. Because I'm having a doubt that whether it is 0.38 or 0.70. That is my doubt, sir. Yes, I will You have see it. taken capitalization for 0.38. My doubt is whether it is 0.70 or 0.38. That is my doubt, sir. Okay, we'll check it out. I will give you the solution. Wait. Chalo, what is the question 5 answer? 91,555, sir. Yes, 91,517. Yes, sir. How many digits you have taken? 656. Your accumulated expenses is 856,667. Yes, sir. Yes, sir. Same answer. Yes, sir. Same answer. So 11.50 is weighted average interest. 11.50. Same, sir. Same. Okay. Yes. So 13,91,517 is the correct answer. Yes, sir. Okay. Yes. Chalo. And you want the solution of? Foreign exchange first question, sir. 13, I think it is question number. In that, my doubt is whether we have to capitalize 32 plus 37.5, it is coming to 70 lakhs. We have to calculate how much we have to capitalize. 71.875 we are going to 71.5 we are going to capitalize. 71. It is 32 plus 38, na, sir? No. It is 34.375 plus 37.12. नोशनल सेविंग तो वही ना भाई, वो दोनों का डिफरेंस. Now which method you are using, that is depending on that method. Okay, That so institute material I have done, sir. As per institute material I have done. so this is the method. 71.5 as per Indian currency, as per foreign currency 34.38. Then 37.12 is your notional saving, and your exchange difference is 37.5. Whichever is lower, you are going to consider that. Okay. So two amounts you will consider: 34.38 plus 37.12. 71.50 and 0.38 you will consider in the P&L. And if you go by my simple method, Indian currency this much, foreign currency this two, whichever is lower 71.5, and remaining amount is in profit and loss account. Okay. Okay. चलो come to S10. रचना जी, हमने कहां तक सॉल्व किया था?
अच्छा MCQ 3 बेटा MCQ में लेता हूँ. फर्स्ट आई विल टेक दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट सेशन में आई विल टेक MCQ. ठीक है नीतीश. एस 10 बहुत पेंडिंग रह गया है. यस रेज योर हैंड. हार्दिक रेज योर हैंड बेटा. कहाँ तक कंप्लीट हुआ था हार्दिक हमारा? सर इलो 8 तक यहाँ तक सर. पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज ऑल्सो कवर्ड नो बेटा. यस सर ये दोनों हो गए थे सर 10 से. 10 से आगे हमें कंटिन्यू करना है. यस सर. चलो जितना हो सकता है वो ले लेता हूँ in this session. Otherwise, we'll take it in the next session. Chalo, read this. Hardik. Entity A is a large manufacturing group. It owns a number of industry buildings such as factories and warehouse and offices in several capital cities. The industrial buildings are located in industrial zones, whereas the office buildings are in the central business districts or the cities. Entity A management wants to apply the revaluation model as per ES10 revised to the subsequent measurement of the office building, but continues to apply the historical cost model to the industrial buildings. State whether it is applicable or मतलब not. office building को they don't have to use this revaluation model. Sorry, they have to use this revaluation model, but industrial building they will continue with the cost model. So ऐसा allowed है क्या? नहीं सर, सेम होना चाहिए. नहीं, it is allowed for different. For example, you are revaluing plant and machinery, but Yes, if sir. you are not revaluing motor car, is okay. But you are revaluing one motor car and you are not revaluing another motor car. In that case, it is not allowed. अच्छा Okay. डिफरेंट है. हाँ So सर allowed. different categories are allowed. One Yes. category cost model, one category revaluation model. But under that category, whatever assets you have, one asset is revalued and another asset is not revalued, it is not allowed. Okay, sir. Okay. So suppose if you have motor vehicle, group of motor vehicle, plant and machinery, furniture, and building. Under building also two buildings, residential, industrial, sorry, office building and industrial. You revalued motor vehicle. You have not Yes. revalued plant and machinery. Allowed. Yes, sir. But under that, if plant and machinery one revalued and one is at cost is not allowed. Yes, sir. So this is called as class by class basis. Okay, This sir. is called as class by class, and class by class basis is one class you can revalue, another class you can continue with the cost model. Is allowed. Yes, sir. Okay, read the answer. Illustration 10, no? Yes, beta. Facts of the case. Entity A's management can apply the revaluation model only to the office buildings. The office building can be clearly distinguished from the industrial buildings in terms of their functions, their natures, and their general locations. Provisions of AS10 as AS10 permits assets to be revalued on class by class basis. The different characteristics of the building enables them to be classified as different PPE classes. The different measurement models can therefore be applied to these classes for subsequent measurement. Conclusions. All the property within the class of office building must be therefore be carried at revalued amount. And industrial building can be carried at cost. Cost. Yes, sir. ये रहेगा यार ये तुरंत चेंजेस करवा लो. PPE illustration 10. ठीक है. Next. 11 number. Read the question. Entity A has a policy of not providing for depreciation on a PPE capitalized in the year until the following year, but provides for the full year depreciation in the year of disposal of the asset. Is it acceptable? No, sir. ये एक्सेप्टेबल नहीं है. सेम ईयर में जिस साल डेप्रिसिएशन होगा उसी साल ही हमको उसको माइनस करना उससे.
Sir, read करूँ आंसर? हाँ, it is not acceptable. Yes, Not beta. acceptable. Illustration 11, fact of the case. Entity A has the policy of not providing the depreciation on a PP capitalized in the year until the following year, but to provide for the full year depreciation in the year of the disposal. Provision of years. The depreciable amount of the tangible fixed assets should be allocated on a systematic basis over its useful life. The depreciation method should reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity. Useful life means the period over which the asset is expected to be available for use by the entity. Conclusion: depreciation should commence as soon as the asset acquired and is available for use. Thus, the policy of entity A is not acceptable. एक मिनट ना, एक ही मिनट में इसका एक फोटो निकालता हूँ, बिकॉज एक फाउंडेशन में फिर ये क्वेश्चन गलत है. नेक्स्ट. Illustration 12. And सॉरी. हाँ. Illustration 12. Entity A purchased an asset on 1st January 2001 for rupees 1 lakh, and the ओके, asset एक has सेकंड. तो 2000 में 1 लाख का हुआ. ओके, 1 lakh 21 वी विल एज्यूम एज. Okay, sir. Had an estimated useful life of 10 years and a residual value of nil. 10 years से divide कर देंगे 10,000 rupees डेप्रिसिएशन का 10,000 rupees 10,000 on on 1st January 25, दैट इज आफ्टर 4 years. 4 years. तो एसेट की वैल्यू कितनी होगी? 1 Asset लाख माइनस 10,000 into 4. 40,000 60,000 rupees calculated divided by 6 years. 60,000 divided by 6 years. for नहीं, further further 4 4 years. years. ये 4 divided by 4 15,000. हाँ, so इसको बोलते हैं re-estimation. Yes, sir. So your first 4-year depreciation is 10,000, and after that next 4 years depreciation will be 15,000. Say yes or no? Yes, sir. Check the answer. Cost Got of the the asset. concept? Yes, sir. Easy. So should we Yes. move to 13th number? Yes, sir. Okay. So presentation you understood. 13. Entity B constructs a machine for its own use. Construction is completed on 1st November 2021, but the company does not begin to use the machine until 1st March 2022. Sir, It's your depreciation. fault. Yes, sir, depreciation तो लगेगा. कब क्योंकि से? put to use हम नहीं देखते सर, 1st नवंबर को हमको देखना, put to use हमको नहीं देखना. Yes. So 1st November 2001. Read the answer. Facts of the case. Entity B constructs a machine for its own use. The construction is completed on 1st November 2001, but the company does not begin to use the machinery until 1st March 2022. Provision of years. The entity should begin charging the depreciation from the date the machinery is ready for use, that is 1st November 2001. Conclusion. The fact that the machine was not used for the period after it was ready to be used is not relevant in considering when to begin charging the depreciation. ठीक है. Next. Below 14. A property costing 10 lakh rupees is bought on 2021. It is estimated the physical life is 50 years. 10 lakh divided by 50. However, the company considered it is not likely to be sold after 20 years. The estimated residual value is 20 years time based on the 2021 prices. Case A 10 lakh, case B 9 lakh. Calculate the amount of depreciation. So this is a salvage value. Yes, in sir. short. And if salvage value 10 lakh ka 10 lakh, तो your depreciable value is 0. 0. And 10 lakhs ka 9 lakh means depreciation value is 1 lakh. depreciable value is 1 lakh. 1 lakh. So in first case no depreciation, and in second case 1 1 lakh. lakh divided by 20 years. Got the concept? Yes, sir. देख बेटा सर्वेश, 10 lakhs की एसेट है, रेसिडुअल वैल्यू 10 lakh है.
तो डेप्रिसिएशन कुछ होगा क्या? बिकॉज कॉस्ट इज 10 लाख माइनस डेप्रिसिएबल रेसिडुअल वैल्यू इज ऑल्सो 10 लाख, तो देर इज नो डेप्रिसिएशन। और इधर फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, मतलब 10 लाख माइनस 9 लाख सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 50 ईयर्स नहीं आएगा, 20 ईयर्स, बिकॉज इट इज लाइकली टू सेल आफ्टर 20 ईयर्स, तो 5000 इज डेप्रिसिएशन। एंड फर्स्ट केस में 10 लाख माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 20, 0। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बच्चे वाला प्रॉब्लम है ये। हाँ, नेक्स्ट वन। Below 15. Entity V manufactures industrial chemical and uses blending machines in the production process. The output of the blending machine is consistent from year to year, and they can be used for different products. However, maintenance cost increase from year to year, and new generation machines with significant improvements over the existing machine is available every 5 years. Suggest the sir SLM year to year basis है consistent है. No, now here maintenance cost is increasing, no beta? ठीक है, but output is similar, therefore straight line method. Yes, But वो you have to consider maintenance cost and technical obsolescence also. So institute has given you diplomatic answer. Okay, तो ऐसा फिक्स आंसर नहीं दिया है, और ये फैक्टर भी कंसिडर करो ऐसा बोल दिया है। ठीक है सर. सर रीड करो आंसर. नहीं, ठीक है। ठीक है सर. Illustration 16. Entity A carried plant and machinery in the books at 2 lakh. They were destroyed in the fire. The assets were insured, new for old, and were replaced by the insurance company with new machines at a cost of 20 lakhs. The machines were acquired by the insurance company, and the company did not receive the 20 lakhs as a cash compensation. State how entity A should account for the same. तो कितना अमाउंट है? सर 20 लाख की मशीन है, वो 2 इंश्योर्ड हुई है. lakhs. So facts of the case: the plant and machinery for entity A having a book value. हाँ, when company will give this amount, then we will record it. Okay, Yes sir. the receivable amount will be recorded at fair value. So Yes sir. see, we will assume as 29 की this amount is virtually certain. We virtually certain क्या होता है? I will explain it in as 29. Okay, Okay sir. ठीक है, इसको थोड़ा टाइम रखो, मैं बता दूंगा। ठीक है सर. चलो, come to TYK 12. TYK 12 with reference to AS10 revised classify the items under the following heads: purchase the price of the property, plant and equipment directly attributable cost, and cost not included in determining the carrying amount of an item of PPE. तो परचेस प्राइस में ये कैटेगरीज में डिवाइड करना है। Yes तो sir. इंपोर्ट ड्यूटीज यू विल कंसिडर इन परचेस प्राइस, ठीक है। इनिशियल डिलीवरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। कॉस्ट Yes. ऑफ इंटेंजिबल ये जो है ये भी नॉट इंक्लूडेड। ट्रेड डिस्काउंट परचेस में से माइनस हो जाएगा। Yes sir. कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग नॉट इंक्लूडेड। Not included. इंस्टॉलेशन डायरेक्टली Yes. एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट Sorry, directly attributable. एंड नॉट कंसिडर्ड। Not considered. Yes sir. लेस होता है ना परचेस में से ये, तो वन में से माइनस, परचेस में से माइनस, ट्रेड डिस्काउंट। इजी क्वेश्चन। Yes sir. सो परचेस में ऐड होगा, इनिशियल डिलीवरी सेकंड में जाएगा, थर्ड मतलब नॉट इंक्लूडेड। चलो, TYK 13। TYK 13. ABC Limited is installing a new plant and it's a production facility. कॉस्ट ऑफ It प्लांट has, ऐड होगा, yes sir. इनिशियल Initial डिलीवरी, ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन भी प्रिपरेशन ऐड होगा, ये भी ऐड होगा सर. ये भी इंटरेस्ट ऐड होगा, इंटरेस्ट चार्जेस
ऐड नहीं होगा सर, और एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऐड होगी और ऑपरेटिंग लॉसेस ऐड होगा। प्रेजेंट वैल्यू होगी ना सर ऐड? प्रेजेंट वैल्यू, पर अभी उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया। अच्छा, और ये नहीं तो 1 2 3 4 5 5 अमाउंट्स ऐड होगी, 2 नहीं होगी। यस सर। Yes. 5 will be added, 2 will not be added. Okay. Next, TYK 14. टीवाई How के many TYKs are there? सर 19 I guess. 19. ठीक है. I want to give you time for screenshots also. So we have to complete 19 TYKs. चलो. हाँ. TYK 14. Accra Limited purchased a machine for 3,000 lakhs. Depreciation was a charge at the rate 10% on SLM basis. Useful life was 10 years. 300 lakhs. At the year 4, at the end of the year 4, the machinery was revalued at 2,700 lakhs and the same was adopted. What will be the carrying amount of the asset at the end of year 5 and year 6, as there is no change in the useful value? So, sir, 3,000 पे 10% लगाएंगे फॉर एट द एंड ऑफ 4 years, तो 3 years तक। तो करके फायदा क्या है? 2,700 divided by 10. Sorry, 6. 6 है ना? At the end of the year 4, the सर वो machinery was रिवैल्यूएशन के revalued. लिए भी तो देखना पड़ेगा ना। अभी आपके पास क्या पॉलिसी यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। 450, सो आपकी कैरिंग अमाउंट आपकी हो जाएगी 1,800 एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी ये वैल्यू देखोगे नहीं ना आप, रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाओगे 900, 4 साल का डेप्रिसिएशन 1,200 हुआ, यस सर। फिर 1,800 इज अ बुक वैल्यू, यू रिवैल्यू टू 2,700 एंड 2,700 यू विल डिवाइड बाय 6 years, तो यस सर। 450, एंड दिस इज अगेन 6 years, तो 450। यस सर। ठीक है, ये दोनों माइनस करना रहेगा। TYK 14 माइनस, सर रीड करो। नहीं ये क्या रीड करना है, इजी है ना ये तो। यस सर। नेक्स्ट। TYK 15. Sakada Limited acquired a machinery for 2 crore 50 lakhs 5 years ago. Depreciation was charged at the 10% on SLM basis. Useful life is 10 years. At the beginning of the year 3, the machinery was revalued at 3 crore, with the surplus on revaluation being credited to revaluation reserve. Depreciation was provided at the on the revalued amount over the balance useful life of 8 years. The machinery was sold at a current year for rupees 1 crore 12 lakh 50,000. Give the accounting treatment for the above in the company's account, and what will be your treatment if the machinery fetched only 42 lakh 50,000 now? देखो 2 crore 50 lakhs था, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 25 lakhs, 25 lakh for at the beginning 2 years के लिए सर 50 lakhs, 50 lakhs, 2 करोड़ वैल्यू आ गई। 2 करोड़ की तुम्हारी बुक वैल्यू हो गई 3 2 करोड़ years का, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3, 2 करोड़ का 3 करोड़ किया, यस बराबर। यस सर। अभी 3 वन करोड़ का 1 करोड़ रिवैल्यूएशन रिजर्व में चल जाएगा। 8 years के हिसाब से 37,50,000, ये 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन, 4th ईयर का एंड 5th ईयर का, मतलब 37.5 into 3, सर मतलब 1 कितना करोड़ हुआ? 1 करोड़ 12 1 लाख करोड़ 12 लाख 50,000। 50,000। नहीं नहीं बेटा, ये डेप्रिसिएशन हुआ, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके 1 करोड़ 80 1 करोड़ 87 लाख 50,000। 50,000, एंड 1 करोड़ 12 लाख 50,000 में आपने बेचा, सर लॉस है। लॉस है।
1,87,50,000, यस। लास्ट के 3 जीरोस उड़ा दिए तो लॉस, 75 लाख। एंड 4,250 में बेचा तो बड़ा लॉस। लास्ट के 3 जीरोस उड़ा दिए, रुपीज इन 1,000। ओके, यस सर। सबके 3 जीरोस उड़ाई दो। नाउ इजी। यस सर। यस, नेक्स्ट टीवाई के 16। TY के 16. Akshar Limited installed a new plant, not a qualifying asset, at its production facility and नॉट अ incurred क्वालिफाइंग एसेट का मीनिंग क्या होगा? इंटरेस्ट आपका P&L में interest. जाएगा। Yes sir, वो capitalize नहीं होगा. हम्म, The following cost of the plant as per the supplier's invoice is 30 lakhs, initial delivery and handling of 1 lakh, cost of site preparation 2 lakh, consultant's fee 50,000, interest charges not included. फिर estimated dismantling amount इसका present प्रेजेंट value वैल्यू ले लेंगे उसकी, एंड ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं नहीं लेंगे। include करना. हम्म, The company identified the motors installed in the plant as a separate component at a cost of rupees 5 lakh purchase price, सो and the other कंपोनेंट अकाउंटिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? component accounting. हाँ, नाउ दिस इज अ न्यू पार्ट इन दिस क्वेश्चन। सर ये तो रेशियोज में डिवाइड होगा. हाँ, वेरी गुड। तो टोटल आपका 33 लैक्स आया, 33,80,000। इफ यू कंसिडर ये टिक का जो आपने किया टोटल, यस तो सर. यू विल गेट दी 33,80,000। 80,000. नाउ your asset will be bifurcated, 5 lakhs, okay, purchase price है। तो अदर सर प्राइस इज 30 30 में लैक्स में से 5 एंड 25 1:5 का रेशियो. 1:5 का रेशियो। यस सर. So I will divide 33,80,000 in 1:5 6 ratio. 1:5 ratio. रेशियो सर. So लो कैलसी पे 33,80,000 divided by 6 into 1 is equal to, आया क्या? 563,333। 563,333 और इनटू में 5 करेंगे तो आ जाएगा 28 5 लाख is equal to 28,16,667। 67. Now what is given? And the other costs were allocated to them proportionately, and the motor का ये The depreciation company depreciation useful वाले life of plant and those of motor का 6 years, और plant का 10 years. plant का 10 years, Yes correct sir. है? Yes sir. Now what is the depreciation after 4 years? WDV. Sir At the end of the SLM year 4, the company replaced the 6 लाख से मोटर कार रिप्लेस किया, और नई मशीनरी का वैल्यू, नए मोटर कार का वैल्यू विल बी 5 years। yes sir. नए मोटर वैल्यू, लाइफ ऑफ द न्यू मोटर इज 5 5 years. years, करेक्ट? Yes sir. हाँ। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस एट द एंड ऑफ द ईयर 4? सो 6 years का लाइफ डिवाइड किया हमने, टेक ऑन कैलसी। इधर गलत हुआ है, 563,333, 563,333 कितना लाइफ था? Sir 10 years. डिवाइड बाय No, 6 6 into 4. into 4, 3,75,555. 375, Sir डायरेक्टली माइनस कर आया ये आंसर. एंड 563 में से माइनस कर दो, 187 यू आर 7. गेटिंग 187,778, करेक्ट? Yes sir. एंड अदर का डिवाइड बाय 10 into 4 आएगा, करेक्ट? Yes sir. सो 28,16,667 डिवाइड बाय 10 into 4, 1 पहला आया 1 1 1 2 2 6 6 11,26,006. 11,26,667 minus 28 16,667 16 lakh 16,90,000, आ correct? रहे सर. यस सर. हाँ। अब सर रीवैल्यू होगा ये. एंटायर फिक्स एसेट बराबर, अभी ये 187 आप तो निकाल दोगे इसको, डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा. एंड मोटर कार टू बैंक इज न्यू 6 lakhs, प्रीवियस पार्ट डी रिकॉग्नाइज, नो? यस सर. प्रीवियस पार्ट डी रिकॉग्नाइज, P&L टू मोटर टू बैंक,
Now, what is the your new motor value? New motor 5 lakh का है शायद 16 lakh 90,000 plus 6 you lakh bought 10 6 lakhs, no? 6 lakh 22 lakh 90,000. $22 90. yes sir एक सेकंड ना, इधर गड़बड़ हुआ है कुछ तो. ठीक है. नाउ यूर एसेट वैल्यू 16 लाख 90,000, क्योंकि ये पी एंड एल में जाएगा, प्लस 6 lakhs. What is the value? 16.9 plus 6 sir 22.9 Correct. yes sir And revalued amount revalued amount 6 lakhs and 25 plus 6 31 25 lakhs. Therefore, revaluation reserve at the end it is given. 2 lakh 10,000 Ah, this is the correct presentation. Correct. yes sir So plan to revaluation surplus entry got the entry. yes sir And then 25 lakhs की motor life now it will be 5 years and इसका 6 years. yes Correct sir है? So 5 yes years and 6 years. 4 years already completed. At the end of year 8. At the end yes of year 8 means 4 years 4 more साल बाद. करेक्ट है? तो yes ये sir 4 साल बाद की वैल्यू आफ्टर 4 years 6 lakhs into divided by 5 into 4. So 4,80,000. You have to be very careful solving this question. 1,20,000 and second 12 one is lakh 12 lakh 66 100 divided by 6 6 into 4. 12,66,667. 667 1900 minus 1266.667. sir 6 6 lakh 33 333 and 6 lakhs you received. And in सर which इसके ratio? रेशियो में ये सर लॉस हो जाएगा ये लॉस डिवाइड कर देंगे इस रेशियो में वो Yes. ये लॉस जो है ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे? इसमें 120 एंड 63 66 और वही रेशियो में अपना लॉस भी होगा और वही रेशियो में 6 lakhs इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड. सर जब फर्स्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन करा था ना सर मैंने इसको लॉस को भी 1:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन फिर मैं सोल्यूशन देख के देखा था ऐसा क्यों हुआ सर Because we will record it in the WDV ratio, no? Loss will be. लॉस Because हमेशा there is revaluation. So you cannot take it in 1:5 ratio. ठीक है सर Better ratio is WDV ratio. And what is ओके सर WDV? 1,20,000 and 6,33,333. And I ओके सर think ये presentation आपको ज्यादा easy लगा होगा यस सर ऐसे ही क्या था सर सही in tree diagram. यस सर मेरे को ट्री में ही समझ में आता है नहीं तो ऐसे बॉक्सेस में नहीं कर पाता मैं Yes. 60 number you try it by your own. यस Changes करने पड़ेंगे इसको. ये बहुत बढ़िया question था. Yes. Now one more time you solve this question. यस सर I will take 17 question as a last question or 18 19 we will take it in the next session. Okay. ओके सर चलो. हाँ. भरत इंफ्रास्ट्रक्चर 16 is very important question. 16 को VIMP treat करना ये must question है. ये try करना ये वापस. I will give you the solution, so don't worry. TY के 70 भरत Tomorrow, day after tomorrow, I'm going to start with very, very important accounting standard. Don't miss it. I'm going to start with 28. It will take 2 days to complete it. Okay. बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, डिटेल में करने वाले हैं बुधवार से. ओके सर हाँ. Bharat Infrastructure Limited acquired a heavy machinery at a cost of 1,000 lakhs. The breakdown of the components are not provided. The estimated useful life of the machinery is 10 years. At the end of 6 years, the turbine, which is a major component of the machinery, is needed a replacement. As further usage and maintenance
was uneconomical. The remainder of the machine is in good condition and is expected to last for the remaining 4 years. The cost of the new turbine is 4,50,000. Give the accounting treatment for the new turbine using the SLM depreciation and discount rate is 8%. Now see beta, this 1000 we cannot bifurcate in two parts. Why we cannot bifurcate? Because bifurcation is not given. But after 4 years, you change the turbine and new turbine is costing you 450 lakhs after 4 years. So can you imagine what is the today's value of 450 lakhs? It's very simple. I will do 450 divided by 1.08 raised to 4. Yes. So it will give me present value of 450, correct? Yes, sir. 1, 2, 3, 4. So this is 330.6. At the end of the year 6. Sorry. At the end of the year 6. So और 2 बार करना पड़ेगा. हाँ, and this is going to use for more 4 years. Sorry. मैंने गलती से at the end of year 6 नहीं देखा. So you are at the end of 6 years and you are going to purchase new turbine for next 4 years. बराबर. तो वी आर एट द एंड ऑफ 6 ईयर मींस 450 की आज की वैल्यू निकालना रहेगा तो यू विल डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 450 डिवाइड बाय 1.08 रेज टू 6. Yes, sir. 283.57. Okay. And out of that 10 into 6 you have completed. So that de-recognize and new part you will recognize. This is very IMP question. If there is a provision, if you know that in 100 pages book we have written, if you cannot estimate, if you cannot bifurcate the cost, you have to re-estimate your cost. Okay. तो जब आप लोग ये बाइफरकेट नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज की कॉस्ट लेके उसकी 6 साल पहले की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. एंड यू विल डी रिकॉग्नाइज लास्ट पार्ट. नाउ हाउ मेनी इयर्स यू कंप्लीटेड? 6 years. And what is the life of that turbine? 10 years. Previous part. So this question is related to previous part if amount is not available. So ये question के ऊपर लिख के रखना previous part if amount is not determinable in year 0. In year 0. समझ में आया? Yes, sir. और फिर क्या करोगे? When you calculate present value, after that you finished 6 years. तो आउट ऑफ 10 years तो उतना पार्ट का आप लोग क्या करोगे? बुक वैल्यू आप लोग ये माइनस करोगे. ये माइनस था बेटा बीच में, ये माइनस है तो उतना पार्ट आपको डी रिकॉग्नाइज करना है. ठीक है. कितना आया डी रिकॉग्निशन? कुछ तो गड़बड़ हुआ है. डिवाइड बाय 10 into 6. तो ये कितना आया? 170 पॉइंट. बराबर है क्या? मेरा क्यों गलत आया फिर? 113.543 सो बुक वैल्यू करेक्ट. ये माइनस करना रहेगा या तो सिर्फ एंड 450 को ऐड करना है. तो पुराना पार्ट 0 हो जाएगा और नया पार्ट ये 286. तो ये आपकी कैरिंग अमाउंट दिखेगी. 450 इज अ न्यू वैल्यू प्लस 486 286. करेक्ट है? हाँ सर मैंने एक ऑल्टरनेटिव मेथड से करा लेकिन आंसर मेरा यही आया. तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं यही आंसर रखो ना. इट्स वेरी सिंपल. सर मैंने पहले तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाया, सेम टरबाइन आ गया, उसमें 1000 में से मैंने इसको माइनस करा और उसका 6 इयर्स निकाल दिया और नहीं उसको अभी मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? ये सिंपल है ना. ठीक है सर. और ये भी इधर भी माइनस लिखना रहेगा बेटा. इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो. ठीक है सर. ठीक है. चलो टेक अ स्क्रीनशॉट्स. कहाँ से लेना है आपको स्क्रीनशॉट बेटा? सर एलू 9 तक तो आपने दे ही दिया था, उसके बाद से ही. चलो एक बार डन बोल देना बेटा. आज बहुत स्क्रीनशॉट्स है,
बहुत राइटिंग है आज, बहुत पढ़ाई है आज। हाँ, स्क्रीनशॉट 1। डन सर। सॉरी 2। डन सर। डन सर। डन सर। हो जाएगा ना लिख के बेटा? हाँ जी सर, हो जाएगा। डन। आप मेरे आंसर्स के बाद ही लिखते हो क्या पहले ही लिख देते हो? सर एक बार रफ में ट्राई कर लेता हूँ, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपसे समझ फिर लूंगा। बाद में ही करते हो ना मैंने बताने हाँ के जी बाद? सर। हाँ जी सर, फिर तो बाद ही करता ओके गुड। हूँ। डन सर। गलत आंसर मत रहने देना। हाँ जी सर। डन सर। हार्दिक, कितना टाइम जाता है बेटा आपका? सर ये लिखने में? बहुत टाइम जाता होगा ना? नहीं सर, रात को लिखता हूँ मैं तो। मैं मतलब सुबह तो फ्रेश माइंड में थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट हो जाता है, रात में ये लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। ओके। डन सर। फिर भी 1.5 घंटा तो जाता होगा। हाँ जी सर। डन सर। ऑल्टरनेटिव डेज का फायदा होता है आपको? हाँ सर, ऑल्टरनेट डेज का होता है, जिस दिन जिसकी क्लास होती है उस दिन उसी का रिवीजन होता है, उसके बाद दूसरा अगले दिन जिसका क्लास होगा उस दिन उसका करेंगे सर। डन सर। एनी सजेशन दैट यू वांट टू गिव? नहीं सर, सही चल रहा है। सब मैं कौन कुछ? होता हूँ सर सजेशन देने वाला? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं, ऑलवेज स्टूडेंट्स वी आल्सो टेक इट इन पॉजिटिव वे। फिर भी आपको लगता है, नहीं नहीं बताइए। सर, सब सही चल रहा है सर। डन सर। डन सर। सभी फैकल्टीज के साथ आपका रेपो मैच हो रहा है? हाँ जी सर। डन सर। डन सर। डन सर। आई विल गिव यू स्क्रीनशॉट्स ऑफ 18 और ये भी लिख लेना, दो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन एंड यू कैन सॉल्व इट एंड चेक द आंसर। डन सर। दिस इज न्यूली एडेड 19 नंबर। यस सर, ये न्यू है सर। डन सर। ओके 16। इसका इंडेक्स लगेगा ना? इंडेक्स बेटा। डन सर। डन सर। फाइनल का मत लिखना, फाइनल का ओके। मत लिखना। Whether we made some mistakes in this? No, no. नो सर। कुछ थे शायद से, एक ही था शायद, दो बहुत कम थे। स्क्रीनशॉट 3। डन सर। 4। डन सर। 5। डन सर। 6। डन सर। 7। डन सर। डन सर। 1 मिनट 1 मिनट। 8। डन सर।
9, Done, sir. 10, Done, sir. 11, Done, sir. 12, Done, sir. 13, Done, sir. 14, Done, sir. 15, Done, sir. 16. Done, sir. Over. Yes, And sir. extra questions, I will send it in the BOS app with answers. Don't worry. A16 ka I will provide you answers also of extra questions. Thank you. Take care. Bye bye. I hope you enjoyed the session. क्या Thank you, क्या sir. समझा बेटा आज हार्दिक? सर AS16 के पहले तो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे हैं सर, उसमें एक आध मेरे को डाउट था, वो क्लियर हो गया सर। वो स्पेसिफिक और जनरल बॉर्डरिंग में था, वो क्लियर हो गया। एंड सर AS10 का वो मैंने रेशियो गलत ले लिया था, वो आपको बताई थी मैंने, वो ठीक हो गया सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और हार्दिक, यू आर डूइंग हार्ड वर्क, प्रॉपर हार्ड वर्क। सो बहुत ज्यादा कर रहे हो, टेंशन मत लीजिए। 100 पेजेस की बुक रीड करते रहिए। 400 पेजेस की बुक ऑलमोस्ट अभी कितनी कंप्लीट हो गई? पेज नंबर डाले आपने उसके ऊपर? नहीं सर, पेज नंबर नहीं डाला, पेज लेकिन नंबर आधे से आज, ज्यादा हो चुकी है। पेज नंबर डालने का, क्योंकि इंडेक्स कंप्लीट करना है आपको। ठीक है पेज सर। नंबर मुझे इंडेक्स कंप्लीट करो। हाँ जी इंडेक्स में सर। वी नीड 1 पेज नंबर कॉलम। तो हाँ जी सर। नोटबुक अच्छे से रखो। एंड कितना टाइम लगता है पूरा कॉपी पेस्ट करने को ऑलमोस्ट? सर आज तो खैर 2 घंटा जाएगा। 2 घंटा जाएगा? चलो, हाँ आप आपके दिमाग में मैं 2 घंटा तो रहूंगा मतलब। हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। टेक केयर, बाय बाय। निसर्ग जी बंद कर दीजिए।